Good morning, students. Today we will start our new chapter number 13. Why do we fall ill? This is the name of the chapter. The chapter has many points for study. A few points here I have written for today's discussion. What are these points? Like introduction, activity from your textbook. The chapter has started with an activity, that is an illustration, and with that illustration we will conclude something in today's lesson. And health and disease in human communities are very complex issues with many interconnected causes. This is the important points for discussion. Next, we will discuss health and its definition and significance of health, personal and community issues both matter for health, distinction between healthy and disease free. These are some points of discussion. But before going into the point, we may look that if we thinking about the disease and we are thinking that we are not feeling well, then at that very time, a traditional cause will be seen. What is that traditional cause? May I think that I am not feeling well, then that means our thinking point just go to that side, that something is wrong with our body. That means we are actually suffering from a kind of disease. This older concept of the disease free or the health is now here. You may see that already rejected, as because if we talking about the health, it not only merely means that we are disease free. This type of aspects, these types of factors we will see here in our lesson. In the second important thing is here that if we from the older times, it has been seen that there are so many diseases and there are different factors related with these diseases. But nowadays, it has been supposed that the disease and their immediate cause is not only responsible. Immediate cause means like that, suppose somebody is suffering from a kind of disease like tuberculosis. What is the immediate cause of this disease? The immediate cause of this disease is a kind of microorganism, that is bacteria, Mycobacterium tuberculosis. It is an immediate cause. But what are the other causes which may be different at different level? That will be also discussed. That is the inner side of the causes of the disease that's not exposed before us. All those points will be discussed. But we have to start the topic with an activity. What is that activity? It is not in your memory, but may you trace it when you will search that in 2001, on the 26th January, on the day of the 52nd Republic anniversary,
there is a disaster. What is that disaster? Earthquake in the Gujarat, Bhuj. Bhuj is the main area, and Latur, Usmanabad, Kashmir, and many more areas at that time affected due to that earthquake. This is the activity, and in this activity, in this illustration, it is now required that what our observation, if there is such type of disaster happen, what are the impact of that disaster? Suppose if there is a badly affected by the earthquake in all these areas which I have told you, like the Bhuj, like the Usmanabad, like the Latur, and like the other areas of the other part of our country. What has happened at that time? There are two different situations. The first situation is that during this disaster, there is a loss of lives, there is a loss of property, there is a loss of many more things. In our surrounding, what are the component parts of our environment? All are affected, whether it is the living matter or whether it is the non-living matter. Our building has collapsed, the bridges has collapsed, there is a total disruptions of the transportation system, there is a damage of communication system, the food supply has closed, there is a scarcity of drinking water, the supply of water totally disturbed, the electric power supply has disturbed. All these things may impact an individual's life or the lives of the community. That is the one important thing. Just after when the incident occurred, but there is a two different situation. What I have told, the first situation, what happened, there are so many lives lost, and the lives which saved at that time, they may be with multiple injuries like the bone fracture and many more things. And the second situation is that post disaster, घटना हो गया, भूकंप आ गया, बर्बादी उससे हुई, उस समय का जो लॉस हुआ, जिसमें जीवन का लॉस है, जिसमें कई तरह के मल्टीपल प्रॉब्लम अराइज किए, वो होने के बाद अब घटना जब समाप्त हो गया, उसके बाद का जो पोस्ट डिजास्टर जो इम्पैक्ट हुआ हमारे सोसाइटी पर, उस एरिया में रहने वाले लोगों पर, उसका ऑब्जर्वेशन करना। तो दो तरह के ऑब्जर्वेशंस हम उस एक्टिविटी के द्वारा, उस इलस्ट्रेशन के द्वारा करेंगे, और उसके बाद ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस तरह के डिजास्टर, ऑन दिस टाइप ऑफ डिजास्टर देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ situations. The first situation, when the disaster happened, when the like cyclone, like the earthquake or any other things, that how directly impact at that time. And after when the destruction is after destruction, the post disaster, and we will look both the observations and try to find out our observations in this regard. So let us see what will happen in both the situations. I have earlier told you that this chapter has started in a new or in a unique way. That means with an illustration, with an activity. In that activity, an incident was illustrated. Depending upon that incident, that is the disaster like the earthquake in the many areas in 2001. And what is the impact of that earthquake? The problem of health started
And that problem of health, how manifold and diversified in many ways, that will be important observation from that activity. So now what I have told you, that there are two different types of problem will arise. The first problem is that at that time when the incident occur, what's happened, and after post disaster, what is the health problem. The observation, disaster of any kind causes several immediate and post disaster. Immediate means at that time when the incident occur. Immediate and post disaster. Immediate and post disaster. Here immediate and post disaster, the two different health problems. Now look first, immediate health problem. Severe or minor physical injuries and fracture of bones, and loss of family members and destruction of property, livestock and crops. Disruption of food, what all these things already I have discussed, of food and water supply, and unavailability of transport and medical aid, leading to hunger, dehydration, weakness and severity of diseases. So these are the some problem, immediate health problem we have may observed. वो सारे प्रॉब्लम जो इमीडिएट हो सकते हैं, तुरंत जो होंगे उस हादसा, उस घटना के तुरंत बाद, उसी समय जो घटना घटेगी और उस समय जो उसके जो इम्पैक्ट होंगे, उसके कुछ यहाँ पे नमूने आपको दिखाई दिए. मैंने फिजिकल इंजरीज़ जिसमें कुछ माइनर इंजरीज़ होंगे, मल्टीपल फ्रैक्चर होंगे, मल्टीपल इंजरीज़ होंगे, उसके बाद फैमिली का फैमिली जो है उस तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसके सारे सदस्य ख़त्म हो जाएंगे. और उस सूरत हाल से निपटारा के लिए जो है क्या सामने बात आती है, इसको हम लोग पोस्ट में देखेंगे. लेकिन अभी हम लोग जो उस समय का जो तबाही और बर्बादी से जो पैदा हुआ है कंडीशन, उसको हम लोग देख रहे हैं. हमारे जो है लाइव स्टॉक यानी कि जो हमारा जो कैटल है, हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जितनी सारी चीज़ें आती हैं वो है, इनको नुकसान होगा, हमारे फसलों की तबाही होगी, है ना. इस तरह से हमें फूड नहीं मिल पाएगा, हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो टूट जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टूट जाएगा, बहुत सारी जो परेशानियां होती हैं जिससे भुखमरी होगा, है ना, और कई तरह की बीमारियां देखने को मिलेंगी. ये सारी चीज़ें उस घटने के तुरंत बाद होगा. और अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट विल हैपन आफ्टर द पोस्ट डिजास्टर हेल्थ प्रॉब्लम. इन दैट पार्ट of the observation, we will may also summarize the several points before you. Now look the post disaster health problems. You have seen the destruction and what is happening after the destruction, just immediate impact, immediate health problem. And now look about the post disaster health problems. हमें दो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिखाना है, शो करना है इस एक्टिविटी में. एक ऑब्जर्वेशन इमीडिएट जो हेल्थ प्रॉब्लम का है, और दूसरा जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों का होगा वो होगा हम लोगों का पोस्ट डिजास्टर health problems. So now look about all these two several points. In the second part, permanent disability of body organs in some people, mental. When there is a incident occur, at that time there are several type of severe injuries or the minor injuries lead to the disabilities of the people, of many organ or the multiple organs or any particular organ. In that case, it may be permanent disability. ऐसा होने से कुछ लोग तो माने परमानेंटली ही माने डिसेबल हो जाएंगे. कोई अपना हाथ खो दिया, किसी ने अपना पैर खो दिया. इस तरह से जो लॉस होगा वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाएगा, जिसके कारण जीवन भर जब तक वो ज़िंदा है
वो उसके साथ लगा रहेगा। इसके बाद देखिए मेंटल ट्रॉमा, किसी का परिवार के सारे लोग लॉस हो गए, अब उसका एक जो मेंटल परेशानी उसके ऊपर आएगा, जो उसे जिंदा, वो बच गया लेकिन बच करके वो सोच रहा है अपने परिवार के सदस्य के बारे में, फैमिली मेम्बर्स के बारे में, कि किसी ने अपना माँ खो दिया, किसी ने अपना बाप खो दिया, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना वाइफ को खो दिया, किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपनी बहन को खो दिया, किसी ने अपने हस्बैंड को खो दिया। ये सारे प्रॉब्लम्स जो होंगे ये एक मेंटल ट्रॉमा का कारण बनेगा, है ना। और बहुत सारे का प्रॉपर्टी भी चला गया, when they lost property, when they lost the crops, when they lost the livestock, their earning, their economical condition will be already deteriorated, and economical condition if deteriorated, there will be many more problems in that family. Outbreak, ये देखिए आउटब्रेक ऑफ मैनी, फैल जाना, बहुत सारे बीमारी जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ इसके बाद फैलना शुरू होंगे, और उसका कारण रहेगा कि ऐसे अफेक्टेड स्थानों पे जो देखा जाता है, जो अपरेंट है, वो है फूड, ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर एंड ओवर क्राउडिंग इन रिलीफ कैंप्स, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पेस्ट एंड वेक्टर्स ऑफ डिजीजेज इन अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट। जब वहाँ पे इतने सारे घटनाएं हो गई और उसके बाद जब इतने सारे जीवन लॉस हो गया, इतने सारे लाइफ लॉस हो गया, जिसमें न सिर्फ इंसान की ज़िंदगी का लॉस होना है बल्कि लाइव स्टॉक का भी है, प्लांट्स का भी है, एनिमल का भी है, ह्यूमन का भी है। तो ये सारे जो है एक इन्वायरमेंट को माने अनहाइजेनिक बना देंगे, और जब इन्वायरमेंट वातावरण हमारा अनहाइजेनिक बन जाएगा तो उसके कारण पेस्ट और वेक्टर अपना काम करना शुरू करेगा, जिससे तरह तरह के अनहाइजेनिक कंडीशन में बीमारियां होने लगेंगी। इन बीमारियों में कुछ बीमारियां जो यहाँ पे है, मलेरिया है, डेंगू है, फिलिराइसिस है, ये सारी बीमारियां होंगी, और इसके साथ और भी कई तरह के रोग के उत्पन्न होने का चांसेस रहेगा। तो दिस इज़ द वन सेकंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दैट इलस्ट्रेशन। नाउ कम टू द अनदर पार्ट ऑफ आवर लेसन, दैट इज़ द हेल्थ, हाउ वी विल डिफाइन हेल्थ। बट बिफोर दैट वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज द इंटर कनेक्टिविटी। व्हाट इज दिस interconnectivity? When we are talking about the organ and system, and when we are talking about our cell, our tissue and their functions, then that time we have some things, there are some important things. What are that important things? Like if we talking that cell is the basic structural and functional unit of life, basic structural and functional unit of life, functional unit of life, that means whatever may be the structure of an organism and what are the functions the organ, the system or any unicellular body may perform with the help of that structure, that unit, that is the cell. That means the cell is responsible to control all the functions, all the activities of the living organisms. सेल अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट है तो उसके स्ट्रक्चर यानी कि उसके बॉडी शेप, उसके जो डिज़ाइन है उसको बनाने, उसके शेप, साइज और उसके स्ट्रक्चर को बनाने में उसका कंट्रीब्यूशन है, और उस स्ट्रक्चर के द्वारा, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फंक्शन होंगे
वो सारे फंक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल के ऊपर है। यूँ तो हमें ऐसा लगता है व्हेन वी study the cell, about the cell, at that time maybe we think that cell is a very important thing and it is maybe not dynamic. इम्पॉर्टेंट है जो कि कार्बन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हैं, जिसमें प्रोटीन भी हैं, जिसमें फैट भी हैं, जिसमें बहुत सारे माने वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो आप किसी न्यूट्रिएंट के देखते हैं वो सारे कंपोनेंट पार्ट उसमें है। लेकिन उस कंपोनेंट पार्ट और उसके इंटरैक्शन होने के बाद ही सेल एक अपना डायनेमिक रूप लेता है। और सेल जब तक के डायनेमिक नहीं रहेगा, किसी भी लाइफ के जो एक्टिविटीज़ हैं उसका समझिए कि वो लाइफ के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। तो यानी कि सेल जो है एक ऐसा यूनिट, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है जो कि सारे लाइफ से रिलेटेड फंक्शंस और लाइफ से रिलेटेड, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। अब सेल डिफरेंशिएट करेगा, सेल डिवाइड कर रहा है, सेल मल्टीप्लाई कर रहा है, सेल ग्रोथ कर रहा है, सेल डेवलप कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स? इट मीन्स दैट आफ्टर अटेनमेंट ऑफ द मैच्योरिटी सेल will start to divide. After division of the cell, what will happen? It will differentiate. And after the differentiation, the tissues, a group of the cell has formed. This group of the cell may do a specific job or duty for the organism's body. And when the group of tissues may differentiate to form an organ, there are two or three or one or more than one organ or two or three or many more organs may be composed together and form a particular system, and that system will work and do a greater job for the body, for the living organisms. तो आप ये सेल के एक्टिविटी को देखिए कि सेल किस तरह से डायनेमिकली जो है सारे परफॉर्मेंस को कर रहा है। कंटिन्यूसली ये वर्क करते रहता है और इसके वर्क करने के कारण है कि इसका मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, इसमें डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, जिससे टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गन, टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन के बाद ऑर्गन बन रहे हैं, ऑर्गन से फिर सिस्टम एक बन जा रहा है और इस तरह से। तो ये एक इंटरकनेक्शन है इसके अंदर सारे। अगर टिश्यू वर्क कर रहा तो वो सेल से उसका इंटरकनेक्टिविटी है। अगर हमारा कोई ऑर्गन वर्क कर रहा तो टिश्यू के साथ उसका इंटरकनेक्टिविटी है। अगर कोई सिस्टम वर्क कर रहा तो उसके सिस्टम के सारे ऑर्गन जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होकर के काम कर रहे हैं। दे विल इंटरकनेक्ट एंड दे देन एट दैट टाइम दे विल डू द ड्यूटीज। लाइक व्हेन यू सपोज दैट देयर इज ए डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम? द फंक्शंस ऑफ दिस सिस्टम इज स्टार्टेड विद द इंजेशन प्रोसेस, that is the intaking of food materials. What happened after the intaking of food materials? After intaking of food materials, these food materials undergo for the digestion. What is the meaning of digestion? The meaning of digestion is that when a complex food materials taken by the organisms, that food materials broken into the simpler form with the help of the बायोकैटलिस्ट एंजाइम्स। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है एक सिस्टम के द्वारा, अब इंजेक्शन का काम माउथ कर रहा है। माउथ के अंदर कई पार्ट्स हैं, दांत उसमें एक पार्ट है, टंग एक पार्ट है। तो ये और उसके अंदर फिर जो है सेलेवरी ग्लैंड्स है या जो भी और ग्लैंड्स हैं जो कि एंजाइम्स का सिक्रेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से हर पार्ट, अब माउथ के बाद अब दूसरा जो है पार्ट जो है जिसके द्वारा जो है फूड पाइप जिसको कह रहे हैं, इस फूड पाइप के द्वारा जो है फूड जो है आगे प्रोसीड करेगा, आगे ट्रैवल करेगा, स्टोमक में पहुंचेगा। तो स्टोमक एक पार्ट है, फिर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, फिर उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स हैं, है ना। इसी तरह से सिमिलरली इन द अनदर एग्जाम्पल, इफ वी लुक अबाउट द other system,
Like when you're talking about that lungs are performing breathing, like kidneys are performing ultrafiltration. All these functions interconnected with each other, and this organ and this system, when efficiently do work in our body, at that time we feel better. देखिए, हेल्थ और डिजीज, वाई डू वी फॉल इल, जो ये चैप्टर है वो दरअसल किसको हम किस चीज़ को डील करेंगे इस चैप्टर में? हम इस चैप्टर में बातें करेंगे हेल्थ और डिजीज़ की, हेल्थ एंड डिजीज़ की। इसलिए उस एक्टिविटी में ये दिखाया गया कि देखिए डिजीज़ जो है किस तरह से होता है, हेल्थ का प्रॉब्लम किस तरह से अराइज कर सकता है, साइक्लोन के कारण अराइज कर सकता है, भूकंप के कारण अराइज कर सकता है, कोई और डिजास्टर के कारण अराइज कर सकता है। तो ये सारे एस्पेक्ट इसमें हमको दिखाई दे रहे हैं। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये अभी जो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज़ द मैटर फॉर इंटर कनेक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट पार्ट एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हाउ दे विल डू इफिशिएंटली, how they perform their functions efficiently. If one organ or one part of the body will be damaged, then the another part or the another organ of the body also not efficiently will do their activities, will do their functions. This is the main theme, main point of this discussion. यही हमें समझना है कि अगर सेल अगर एक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो एक एक सेल ठीक रहना चाहिए, उसमें रिपेयरिंग का वर्क होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन का वर्क होना चाहिए सेल के द्वारा जो है डिफ्रेंशिएशन होना है, टिश्यू का बनना है, ऑर्गन का बनना है, सिस्टम का फॉर्मेशन होना है, और उसके बाद अगर एक ऑर्गेनाइज बॉडी है तो उसके सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम, सारे टिश्यू, सारे सेल सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, है ना, उनमें तालमेल, कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, और वो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। If you will suppose that kidney are the lungs performing the functions of breathing, what is this? That means inspiration of oxygen and expiration of carbon dioxide. But this inspiration of oxygen and expiration of carbon dioxide is not only responsible or only will carried out with the help of these lungs, as because after the inspiration what will happen? The oxygen will not only accumulate within the lungs, it will move from that lungs to the different cells where there are presence of the digested food materials, and with that digested food materials oxygen will oxidize and there will be supply of energy. तो ये इस प्रोसेस को समझने के बाद आपको ये समझ में आ रहा कि अगर लंग्स ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इस ऑक्सीजन को फिर लंग्स से सारे बॉडी के सेल तक पहुंचाने का काम कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कर रहा, सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है, जिसमें हार्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हार्ट के कंटिन्यूअली कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होना उसके लिए ज़रूरी है ताकि सर्कुलेशन एस्टेब्लिश रह सके। सर्कुलेशन का इंश्योर होना हार्ट के कंटिन्यू रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन पर निर्भर करता है। अगर वो बंद हो जाए कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, देन देयर विल बी नो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, द लाइफ विल बी कोलैप्स्ड। एंड सिमिलरली अब अगर वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल किडनी के द्वारा निकलना है तो ये एक्सक्रीशन का काम करेगा, वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम करेगा, है ना। तो ये किडनी इज नॉट ओनली responsible. Yes, this system is, after the process of metabolic activities, when there is a formation of waste materials, how this first is in the first step, there the materials, the waste materials which are supposed to be expelled out from the body, that must reach to the kidney,
and how it will reach to the kidney. Maybe the other organ, maybe the other system will help. And in this way, there is a interconnectivity between the different parts or the organs or the systems of the organisms. And after this, an efficiency will be seen in the entire organism's performance, the living organism's performance, and that is also related with health. If there is any problem, if the organ or the parts of the body cannot functioning in a well manner, that means there is something wrong with our body parts, something wrong with our system, something wrong with our general health or the specific health. And that is why we must address all these things in this chapter. Now we will look the definition and the different aspects of the health. Talking about the health, of course, in the first step, it comes to our mind that no, I am free from disease. यही बात हमारे सामने आती है जब भी मैं स्वास्थ्य का बात करता हूँ, हम लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में कहते हैं तो हाँ जी, हम उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये इशारा हम किस तरफ कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेयर ये इशारा जो हम लोग कर रहे हैं कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ. तो ये इशारा हम कर रहे हैं कि अपने वो ऑर्गन, वो सिस्टम, वो पार्ट ऑफ द बॉडी जिसे हम देख रहे हैं कि वो इफिशिएंटली वर्क कर रहा है. तो ये एक ओल्डर कॉन्सेप्ट है हेल्थ का. बट नाउ लुक हियर द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू द हू, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. हाउ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन has defined health. Look here, according to the WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being. A state of well-being is here, a state of well-being of an individual, of a person is related with three different factors. What is that three different factors? Number one, physical. Just we have talked about the physical, like when our organ, our parts or the system of the body are well and in a functioning in a well manner, efficiently, normally, that is the physical well-being. Now look about the mental well-being. It is also a part of the health. And the third one is the social well-being. It is also a part of the health. So that means well-being of all these three means the health. अगर ये तीनों का well-being है तभी ये health है. एक health का definition इस तरह से. What is the mental? What are our expectations about our life? हम किस तरह से अपना जीवन गुजारना चाहते हैं, हमारी क्या इच्छाएं हैं. हम एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट से तो हमारे कुछ इच्छाएं हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हम इतना मार्क्स लाना चाहते हैं, हम ऐसा परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं, हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ये माने हम स्पोर्ट्स और गेम्स में अगर हिस्सा ले रहे हैं तो उसमें हमारा ये होना चाहिए. हम कोई अदर फंक्शन में अटेंड कर रहे हैं, कोई अदर इवेंट में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो उसमें हमारा ये कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, अचीवमेंट होना चाहिए, है ना. तो ये एक मेंटल सेटिस्फैक्शन. इफ वी हैव नो मेंटल सेटिस्फैक्शन, वी आर नॉट ए हेल्दी पर्सन. मेंटल सेटिस्फैक्शन के माने अनलिमिटेड हैं इसके. ये कोई 2-3 पॉइंट मैं आपको बता दूं कि हाँ आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन ऐसा हो जाएगा, हमको अच्छा माने भोजन हमको मिल रहा है तो मेंटली हम सेटिस्फाइड हैं, कुछ अच्छा कुछ पहनने को मिल रहा है, वी आर वेयरिंग अ गुड type of cloth, that means we are mentally satisfied. No, there is many more things come under this category of the mental satisfaction. Even we are well in our physical aspect of the well-being, that means our organ, our system are all well, but we are not mentally well. That means we have some expectations. हमें कुछ करना था, हमारे पास कुछ सपने थे, हमें उसको, मगर हम वो कर नहीं सके, तो वी आर ऑलवेज इन ए
इन मेंटल स्ट्रेस, है ना। तो ये प्रॉब्लम जो है भी एक ऐसा है जो हमें हेल्दी नहीं रख सकता, हमें कभी भी स्वस्थ नहीं रख सकता, हमें कभी भी अच्छा नहीं हम फील कर सकते हैं। तो दैट इज़ द मेंटल। तो देयर इज़ मेनी मोर थिंग्स कम अंडर दिस कैटेगरी। एंड व्हाट इज़ द सोशल? योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड, your relationship with your parent, with your family members, with the neighbors, with the friends, with the colleague, there's so many things under this, happiness, joy, और ये सारे शेयरिंग कर रहे हैं हम, ये हम सारी चीज़ों को हम एक दूसरे से मिल करके बांट करके हारमोनी वे में रह रहे हैं। तो दैट इज़ द सोशल वेलबींग, है ना। अगर हम डिसहारमोनी वे में रहें, अपने पड़ोसियों से हमारा एटीट्यूड जो है, हमारा जो है बिहेवियर अच्छा नहीं हो, है ना। हम इसमें देखिए आपके बुक में ये शो किया गया है कि व्हेन वी हैव ए सम थिंग अबाउट द हेल्थ, जब हम अपने ग्रैंड मदर के हेल्थ के बारे में एक्सपेक्टेशन करते हैं तो हम ये कहते हैं आवर ग्रैंड मदर इज़ वेल। हाउ? हम ग्रैंड मदर से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं इस एज में, इस ओल्डर एज में उनसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो अपने काम को खुद से कर ले रही हैं, उन्हें किसी तरह का किसी का सहायता की आवश्यकता नहीं है। वो बाहर भी निकल जाती हैं घूमने के लिए, वो अपने घर के अंदर रह करके भी अपने सारे काम को खुद से कर ले रही है। तो ये उनका जो पैरामीटर हमने हेल्थ का बनाया है बस यहीं तक बनाया। अब उनसे आप अगर अपने जिस तरह से आप लेबर करते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई के पीछे आप भाग रहे हैं, स्कूल के पीछे भाग रहे हैं, आप किसी और दूसरे चीज़ों के लिए आप बिज़ी हैं, अपने आप को आपने मेंटली फिज़िकली बिल्कुल बिज़ी करके रखा हुआ है, तो उतना काम का एक्सपेक्टेशन, उतना वर्क का लोड आप अपने ग्रैंड मदर से नहीं कर रहे हैं। मगर फिर भी उन्हें आप हेल्दी कह रहे हैं क्योंकि आप जान रहे हैं कि उनका जो है स्ट्रेंथ, उनके लिए पैरामीटर अलग है आपका। कुछ इस तरह से समाजी बिहेवियर है ना। कुछ सोशल माने एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कुछ सोशल माने बातें होती हैं कि अब आप अगर क्लासरूम में हैं, इफ़ ए टीचर हैज़ स्कॉल्डेड यू, टीचर ने आपको डांटा, आपको फटकारा, आप कहा कि योर एटीट्यूड इज़ नॉट हेल्दी। इसका माने क्या है? योर एटीट्यूड इज़ अनहेल्दी या योर एटीट्यूड इज़ नॉट हेल्दी, इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो कह रहा है कि बीमार हो तुम्हें बुखार हो गया, तुम्हें सर्दी हो गई है। जी नहीं, ये एक बिहेवियर की बात है। आपका जो है टीचर के प्रति जो आपका बिहेवियर होना चाहिए उसमें आप कमी है, देयर इज़ ए लैक।